हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। एंड सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखें और इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ह्यूमन राइट्स जो कि हम वेस्टर्न में हम देख सकते हैं, जो यूरोप है, ओके, वहाँ से जब डिकोलोनाइज जो वेव चल था, थर्ड वेव हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, है ना। तो जब ये हुआ तब है ना, बहुत सारे जो नेशंस थे वो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ सॉवरेनिटी, है ना, वहां से निकल के आया। देन तो अब तो सोनिटी आ गई कि कोई अपने अपने देश में इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब सब अपना अपना देश देखेंगे, है ना, कोई एक दूसरे के में नहीं करेगा इंटरफेयर। तो नो इंटरफेरेंस की वजह से डोमेस्टिक स्फीयर में रिजल्ट निकल के आया वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, ह्यूमन राइट्स का काफी ज्यादा वॉल्यूशन होने लगा। तो हम अगर ह्यूमन राइट्स की मीनिंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स which are universal in nature, which are considered as a inherent by the virtue of human being. Okay, so नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कैन बी ट्रेस्ड बाय द जॉन लॉक। जॉन लॉक ने थ्री नेचुरल राइट्स के बारे में बताया, जो कि राइट राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अपने, है ना, उन्होंने थ्योरी में बताया रखा हुआ है। तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा, है ना, प्रीवियस जो क्लासेस उसमें मैंने बताया इसके बारे में। देन इमैनुअल कांट, उन्होंने अपने बताया कि इट इज अ कैटेगरियल और इम्पेरेटिव, मतलब ये कि एवरी मैन शुड शैल बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, है ना। तो साथ ही अगर हम देखें जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर हम देखें तो देखो, फर्स्ट जनरेशन में सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात हुई। सेकंड जनरेशन में हम देखें तो इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। एंड थर्ड जनरेशन में ग्रुप राइट्स के बारे में। जैसे ग्रुप राइट्स अगर मैं आपको बताऊं तो कोई एक फॉरेस्ट है, उसका डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे ना ग्रुप राइट्स आ रहे हैं। वहाँ पे जो और भी लोग रहते थे, है ना, ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे जो आ रहा है ना ट्राइब्स के लिए, उन लोगों के लिए दिक्कत है, तो वहाँ पे ग्रुप राइट्स की बात हो रही है। Scope and ambit of human rights have been expanding over the period of the time. Okay. Then evolution of human rights अगर मैं बात करूँ, during the World War II, millions of Jews means UNDHR, है ना, 1948 में जो ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशन, है ना, डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर आया था। ओके, सो इसमें भी जो जॉन लॉक ने थ्री नेचुरल राइट्स के बारे में बताया था, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना, एंड यूनिवर्सिटी बताया था, यूनिवर्सलिटी एंड इनएलिएनेबल राइट्स, जो कि जॉन लॉक ने बताया था। इमैनुअल कांट के बारे भी जैसे कैटेगोरिकल जो इम्पेरेटिव बताया था, इट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। एंड फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर मैं बात करूँ तो देखो, इसमें देखो क्या क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल पर्सन शुड बी ट्रीटेड, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, दिस राइट कान बी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, अगर आप जेल में भी हो तब भी आप, तो वो राइट सारे जीने मतलब मिले आपको, है ना। इंडिविजुअलिटी, इनएलिएनेबल एंड परमानेंट, ओके, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। देन अगर मैं बात करूँ इनएलिएनेबल मतलब कांट स्नैच, कोई भी आपसे वो राइट्स छीन नहीं सकता, है ना। डिबेट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, हु आर ह्यूमन, ये चीज बताई गई। और ये क्वेश्चन भी किया गया था, देखो, टेररिस्ट जो कि इजिली ह्यूमन बीइंग को मार देते हैं, तो वो क्या ह्यूमन है? क्योंकि अगर आप कोई और किसी को मार रहा है तो भैया ह्यूमन की तो मार रहा है, और ह्यूमन वो कैसे हो सकते हैं? व्हेन डज द लाइफ बिगिन, मतलब स्टेल सेल जो रिसर्चर्स ने बताया इसके बारे में, कि कुछ रिसर्चर ने क्या बताया, 0 से 14 दिन, 0 से 14 दिन से स्टार्ट हो जाता है। किसी ने बताया कि आफ्टर 14 डेज के बाद हुआ है ना। तो अलग अलग से स्कूल्स का थॉट है कि कोई कोई इसी टाइम से लाइफ स्टार्ट हो जाती है, या कोई और बोलते हैं कि कोई 14 डेज के बाद होती है। तो हु शुड बी प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? जैसे स्टेट, एक स्कूल कहता है स्टेट इज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड स्कूल बोलता है कि स्टेट शुड नॉट बी प्रोटेक्टर। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन वाली है। Human rights background. Concept of human rights originated after the Second World War, and it is based on the experience of atrocities committed by the Hitler on Jews. ये हमने देखा होगा, है ना, atrocities बोलते हैं, atrocities बोलते हैं। Okay. Then till World War Second, the principle of the sovereignty of the state was considered as a sacrosanct, and sacrosanct मतलब violate करना किसी को, है ना, and as there was no scope of intervention by the international community in the domestic affairs of the state. And however, it was realized that there is a need to dilute the principle of state sovereignty. There is a need to recognize the role international community, okay,
In case a state violates the rights of its all citizens or persons living in a state, it becomes the responsibility of the international community to come forward for the protection of rights. Okay, then meaning of human rights. Human rights are those conditions of the life that allows us to develop or use our human qualities of intelligence to satisfy our spiritual needs, and we cannot develop our personality in their absence, as they are fundamental to our nature, and without them we cannot live as a human being. Okay, according to the theory of human being, irrespective of caste, class, gender, nationality, and some basic minimum rights should be available to all just because they are human, and hence whether the constitution of our country, sorry, constitution of country recognizes or not, it will be assumed that people possess human rights, and fundamental themes of human rights is universalism, है ना? इसे आपको याद रखने की जरूरत है. ओके, बाकी जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हम देख चुके हैं कि जो अलग अलग जनरेशन में 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रही है, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीजें, जैसे फर्स्ट में सिविल पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड में इकोनॉमिक सोशल कल्चरल, एंड देन इमर्जिंग कलेक्टिव या ग्रुप राइट्स के बारे में बात करें. देन सेवरल एनालिटिक्स क्लेम करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में. देखो, तो उसमें स्पेशली हो सकता है कि शायद कुछ अलग राइट, जैसे वुमन इज इमर्जिंग विच इज इंक्लूड राइट्स दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द थर्ड जनरेशन, एंड स्पेशली इन द रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन या फिर राइट टू एक्सेस द डिजिटल डेटा, ये हो सकता है. देन note में अगर हम बात करें, there is no agreement on the nature of meaning and content of human rights, and the concept of human rights very much contested not only between the east and west but also between the developed and developed countries. Okay, and each group of the nations has a different perception of human rights. Okay, and the development countries of the west believe in supremacy of individual, and they assert the primacy of civil and political rights, while the developing countries of the East focus on the community, unconditioned priority of the class interest, and they give priority to economic, social, and cultural rights. Okay, so यही है कि वेस्ट में इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, एंड हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल पे. Then evolution of human rights अगर हम बात करें तो with the establishment of the UN in 1914, the evolution of the International Bill of the Rights began. In 1948, the UN adopted a universal declaration that included civil, political, and socio-economical rights in a single document. Okay. Then Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948, and it is based on a लॉक थ्योरी एंड इमैनुअल कांट थ्योरी. ओके, लॉक थ्योरी में अगर हम बात करें तो देखो उन्होंने बताया है कि देखो इनएलिएनेबल राइट्स हैं, मतलब बर्थ से ही हमें राइट्स दिए गए हैं जिसको कोई सेपरेट या छीन नहीं सकता, स्प्लिट नहीं कर सकता. बट अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, इट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, मीन्स men are different from animals and one possess reason, and they should be treated as an with dignity. Okay, so ये है कि मैन को ट्रीट करना चाहिए डिग्निटी को. मैन मीन्स सिर्फ मैन ही नहीं, ह्यूमन बीइंग. देन सिंस UDHR are not a legally binding document, and UN subsequently adopted covenant मतलब contract. Okay, on the civil and political rights and socio-economic rights. Okay, then these two covenants, along with UDHR, are popularly known as International Bill of Rights. And this covenant seeks to promote and protect human rights that include right to work in just and favorable conditions, and right to social protection, to have an adequate standard of living, and the right to education and enjoyment of benefit of cultural freedom and scientific progress. Okay, then feature of human rights. Every individual is equally entitled to human rights without discrimination. These rights are interdependent, interrelated, and individual. Individual. ठीक है ना? Then there are the following 5 essential features of the human rights. That is equality, universality, invisibility. Okay. Then inalienable and permanent. Okay. So सबके अलग अलग अगर हम देखें, इक्वलिटी, ऑल ह्यूमन बीइंग आर ट्रीटेड इक्वली, है ना, विच मींस शुड बी गिवन इक्वल राइट्स. यूनिवर्सलिटी में अगर हम देखें, it means irrespective of nationality, all are the treated as a humans, and hence all should possess some basic minimum
rights. So for there no agreement on what rights will be called and a basic minimum, and there is a big difference in the approach of Western and non-Western countries, means South and West countries. Then in the name of the universal values, Western countries promote Western values, which is seen by the some countries as the attempt of cultural imperialism. Then the political leaders were known Western countries and cultural relativistic perspective. Okay, for example, leaders from the Southeast Asia have called for Asian values. However, Western scholars considered it a justification of for authoritarian. Okay, then for supporters of Asian value, social and economic rights will have primacy, but for Western world, civil है ना and political rights are minimum guarantees. ये कुछ बातें कही हैं. Then the invisibility. Human rights are the enjoyed by the human being as an individual, and human rights are based on the concept of autonomy of man. Okay, मतलब किसी में बंधा नहीं होना चाहिए है ना, उसको भी अपना autonomous मिलना चाहिए और सारे राइट्स के साथ. नहीं देखो इनएलिएनेबल वही राइट्स हैं कि कोई किसी भी कंडीशन में छीन नहीं सकता. ओके, वर्च्यू ऑफ दैट राइट्स बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. देन परमानेंट दीस राइट्स आर नॉट बेस्ड ऑन circumstances, and man possess these rights on permanent basis. Okay, so हमने आज ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करा, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.